कौन जान पाएगा बताओ तो? Non, je ne sais plus. Dans l'Himalaya indien, je préfère tout oublier, voyez-vous. Aujourd'hui, ici, aux confins du Népal et du Tibet, dans ce qu'on appelle l'habitat des dieux, il me semble que les divinités et les âmes des morts doivent se partager le ciel avec de nouvelles venues, les ondes électromagnétiques. La modernité se précipiterait-elle aux portes de l'Himalaya, à plusieurs heures de marche de la route? Et ici, c'est moi. Depuis plus d'une décennie, pour le plaisir de la rencontre, je dessine les portraits des montagnards, tels qu'ils aimeraient se voir. Puis je donne libre cours à mon imagination et je peins leurs paysages intérieurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter Digoli, et plus particulièrement Emma de Digoli. Son énergie semblait jaillir du fond de la terre. L'ailleurs qu'elle percevait à cette époque-là était limité. Elle le lisait dans les yeux de ceux qui avaient quitté le village et qui étaient revenus. Emma essayait de jauger. D'abord son père. Il avait dû quitter le village pour l'armée, quelques années, de quoi nourrir ses 8 enfants. Les jeunes ne veulent plus travailler dur? Mais que dire de l'ami et voisin d'Emma, le jeune docteur? Il est paysan à 100% et médecin à 100%. हाँ ऐसा तो कुछ नहीं क्योंकि गांव में हमारा काफ़ी ज़मीन है खेती बाड़ी काफ़ी है घर भी हुआ ये ठीक ही हुआ की पढ़ाई मैंने चंपावत में की चंपावत लोहागाज डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई वैसे सभी चीज़ की जैसे केमिस्ट्री भी होता है इसमें ये एनाटॉमी भी होती है और बिजनेस का भी होता है इसमें सभी प्रकार की मतलब की जाती है उसमें Partir à la ville. Qu'en pensent les parents d'Emma? हमारे तरफ से तो बच्चे कोई भी अपना धंधा करे तो हमको खुशी है। क्यों है? बच्चा अपने पैरों में काम करेगा, अपने हिसाब किताब से चलेगा, वो अगली उन्हीं देखेगा। अब हमको देखा रहेगा तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जैसे हम इस कुएं में सड़ रहे हैं वैसे वो भी सड़। अब तो क्या गरीबी उनके पास, पहले थे गरीबी हुई, पहले गरीबी हुई हम लोगों के पास भी पहले गरीब बच्चे बहुत ज्यादा। Et moi, je me demande ce qu'en pense Dana, sa voisine, elle qui a déjà 5 enfants. मैं उनको बोलती हूँ इतने बच्चे तुमको क्या चाहिए? मैंने इसने जान खा दी बच्चों ने। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो भी भगवान ने मेरे को बच्चे दिए हैं वही पालेगा। Emma s'interroge. S'en aller, revenir, demeurer, obéir, s'abaisser, acquérir, rénover, s'abrutir, transiger, se marier, s'abstenir. Dana, elle, ne semble plus avoir le choix. Elle se contente de rêver. वहाँ अच्छा, दिल्ली अच्छा, दिल्ली अच्छा है। हाँ। स्कूल के बारे में? स्कूल वहाँ होते तो स्कूल जाते हैं, साफ सफाई, साफ खाना, साफ लगाना। यहाँ कितने गंदे होते हैं। Un jour, Dana m'a bouleversée. मैं सोची थी लेकिन थोड़ा बहुत आपसे पैसे बोलूं, मैंने बोल नहीं सका। एक नशा भी नहीं था। मैंने सोचा कि हाँ इससे बोलता हूँ, मैं मेरी दोस्त है। मैंने बोल नहीं सका, शर्म आई मेरे को।
Moi aussi, j'étais affreusement gênée. Donner de l'argent, oui, mais après. Il fallait trouver des solutions pérennes. Et c'est ce qu'ont fait Rashmi et Rajneesh, un couple d'Indiens de la plaine. Il y a quelques années, ils sont tombés amoureux de l'Himalaya et s'y sont installés. Bien vite, ils ont découvert les difficultés des habitants et les problèmes écologiques. Impossible d'y rester insensible. Il leur fallait s'engager, même modestement. Alors, ils ont créé Avani, la terre en hindi. Après une longue réflexion et de lents contacts avec les habitants, Avani a précisé son projet. Donner aux Himalayens le choix de rester dans leur village, d'y vivre plus confortablement et en harmonie avec la nature, plutôt que de s'exiler vers les grandes métropoles. Il se trouvait qu'à Digoli, un rêve se profilait. Les habitants se demandaient, puisque nous sommes dans l'habitat des dieux, le soleil ne pourrait-il pas éclairer nos maisons aussi la nuit? Il paraîtrait que certains panneaux, qu'on dit solaires, permettent ce miracle. Alors, eh bien, rêve et projet se sont mariés. Mais même dans l'habitat des dieux, les miracles de la technologie et des aides de l'État pour le solaire ont leurs limites. Les équipements technologiques exigent de la maintenance. La maintenance exige un petit pécule. Et le petit pécule exigé faisait défaut chez la plupart des Digoliens. Alors, Avani a eu une idée de génie. Et si on ressuscitait le tissage disparu il y a quelques années? Emma et ses copines ont saisi la perche et se sont formées. Depuis lors, chaque jour, leurs mains passent allègrement du fumier le plus épais aux tissages les plus raffinés. Lui, c'est Harish. Il vient de la vallée d'à côté et il s'est aussi lancé dans l'aventure digolienne. Avani l'avait formé au développement rural, mais surtout, condition indispensable, il baignait dans la même culture que les Digoliens.